जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्लेटफॉर्म आपके चैनल पर। डॉक्टर जे.के. तिवारी हियर ऑन योर प्लेटफॉर्म द न्यू ICM फॉर इंग्लिश। जुड़ जाइए, फटाफट लाइव हो जाइए, शेयर कर दीजिए चैनल, ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी कंफर्म कर दीजिए। एंड इफ ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी इज फाइन देन योर क्लास इज फाइन। जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। हाउ डिड यू फेयर टुडे? कैसा था आज आपका दिन? जी तबस्सुम, धर्मपाल, अनुपम धुरिया, आशी पांडे, सुरेश तिवारी, ज्योति, यूनिक एज, निशा बिहान, सभी को गुड इवनिंग, को शाम वाली गुड मॉर्निंग है, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है जी। राधे राधे। हाउ वाज द पेपर टुडे? हाउ डिड यू डू योर पेपर? कैसा आया था आज का पेपर? आपने तो शेयर ही नहीं किया, मैंने तो टेलीग्राम पे पूछा भी था बट नोबडी रिप्लाइड। तो आई होप कि ऑल ऑफ यू हैव रिटर्न फ्रॉम एग्जामिनेशन हॉल। सेंटर से वापस भी आ गए हैं बिकॉज एग्जामिनेशन सेंटर्स वर far away from the location of the candidates, right? इसलिए नहीं आए हुए होंगे। यस सर, जस्ट फिनिश्ड PGT। यहाँ आरके इंग्लिश फिनिश्ड। आज आपका था पेपर क्या, ये बताइए, और पेपर था तो कैसा हुआ? जी गुड इवनिंग सर। EMRS ने तो क्या लिखा है? अच्छा, ठग लिया, लिटरेचर के नाम पे सिर्फ 11-12 क्वेश्चन आए हैं। ओह ऐसा था, सिर्फ लिटरेचर के नाम पे 11-12? ऐसा तो नहीं हो सकता यार, ऐसा तो PG में आते हैं और उन्होंने तो सीधे सिलेबस दे रखा है और कहा है कि कंसर्न्ड एरिया से 80 क्वेश्चंस आएंगे। तो हाउ कुड देयर ओनली 11-12 क्वेश्चन? और एक रिक्वेस्ट है आपसे, सेंड योर पेपर टू माई व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर। फोटो खींच के एक बार भेजिए जरूर, मैं देखता हूँ उस पेपर में क्या आया है और आई ट्राई टू गिव यू द आंसर शीट बाय टुमारो। प्लीज डू सेंड मी द क्वेश्चन पेपर। जी रंजना मौर्य जी को नमस्ते, शिबू पांडे जी को भी गुड इवनिंग। आई लेट यू नो द आंसर्स, प्लीज सेंड मी द क्वेश्चन पेपर ऑन माय टेलीग्राम चैनल। जूली नमस्ते, आपका भी पेपर था जूली? यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यू RP और EMRS, कैसा था पेपर अगर था आज का? तो हाउ डिड यू फेयर? आज से जो क्वेश्चंस हम करने चल रहे हैं फॉर द नेक्स्ट वीक, अगले सैटरडे तक का जो पेपर है 23 को, दैट इज फॉर TGT, EMRS TGT। सर PGT इंग्लिश गुड सर, जनरल पेपर इज टू हार्ड। वाओ, आरके जी भेजिएगा, ये जो चैनल है ना, न्यू ICM इंग्लिश लिटरेचर विद डॉक्टर JK तिवारी, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल एंड आई टोल्ड यू माय फोन नंबर यस्टरडे इटसेल्फ। कल ही बताया था, आप उस पर भी जाकर के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो क्वेश्चन पेपर 8586848190 पर। प्लीज डू सेंड मी योर क्वेश्चन पेपर हियर एंड लेट मी सी। चले शुरू करें। नीरज यादव, जूली जी, मॉडर्न और ब्रिटिश पे 10 क्वेश्चन थे, शेक्सपियर और रोमांटिक पर 1 क्वेश्चन था। वाह। अनीता रमेश जी नमस्ते। वॉइस क्लियर कम हो रहा है? वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या? जरा एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर ऐसी बात है तो। जी रीता, शशि, सभी को गुड इवनिंग। अब वॉइस क्लियर हुई? राइट। जी नीरज यादव जी, कैसा हुआ आपका पेपर? हाउ वाज योर पेपर? जिसका भी है पेपर, प्लीज डू सेंड मी द पेपर इस टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप पर जरूर भेजिएगा। जी पेपर देखा है, एग्जाम नहीं दिया है तो भी वही पेपर मुझे भी दे दीजिए। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। TGT के अकॉर्डिंग शॉर्टर क्वेश्चंस एंड शॉर्टर क्वेश्चंस विद बिग आंसर्स। जी पूजा, राधे राधे। Daily, a novel is written by. Daily is the novel. This is the subtitle. Daily, a novel. This is the complete title. Daily, a novel is written by R.K. Narayan, Anita Desai, Amitabh Ghosh, or Khushwant Singh. Who wrote the novel Daily? Who wrote the novel Daily? A novel
and Delhi is a novel written by one of the Indian writers, and the name of the writer was Khushwant Singh. It was Khushwant Singh who wrote the novel Delhi. Shabash, Huda, Neha, Shibu, very nice. Delhi is a novel written by Khushwant Singh. Next question. In Swift's Gulliver's Travels, Yahoos are placed. Yahoos का place कहाँ है? In Swift's Gulliver's Travels, as you know that Gulliver's Travels are divided into 4 parts. There are 4 travels. In fact, there are 4 voyages. 4 voyages है. First voyage है to Lilliput. Second voyage है Brobdingnag. Third voyage है Lilliput. Third voyage है Laputa, the flying island, and fourth voyage is in Emrs. And the fourth voyage, Gulliver meets talking horses. Talking horses से मिलता है. तो Emrs में, Lilliput में he meets 6 inches people, and here on the island of Brobdingnag he comes across 7 to 2 feet people, and on the flying island he finds a generation, और वो immortal generation है, और यहीं पर flying island है, that is called Laputa, और यहीं पर in the third voyage he reaches a country that is Japan, and here in Emrs he comes across the talking horses, and according to him talking horses are far better than the human beings, right? And here he was sent to the place of Yahoos. Yahoos से यही मिलता है. Yahoos are semi-humans. Yahoos are semi-humans. आधे ह्यूमन से वो और आधे नहीं. और याहूद से उसकी मुलाकात कहाँ होती है? याहूद से मुलाकात होती है in the 4th voyage, right? Answer to the question is A. जी, ग्रामर एंड लिटरेचर विद नेहा सिंह, नमस्ते. नेक्स्ट क्वेश्चन. If a writer uses the word Shakespeare to mean the works of Shakespeare, if a writer uses the word Shakespeare to mean the works of Shakespeare, he is using a figure of speech. He is using a figure of speech, and the question is which figure of speech? जैसे अगर आप ये कहें कि चेतना has read Shakespeare, चेतना has read Shakespeare, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रही है चेतना यहाँ पर? दिस इज द क्वेश्चन, राइट? इफ अ राइटर यूजेस द वर्ड शेक्सपियर टू मीन द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, ही इज यूजिंग अ फिगर ऑफ स्पीच. विच फिगर ऑफ स्पीच ही इज यूजिंग? अब बहुत डर लग रहा है, किस लिए जूली? डर किस लिए लग रहा है? जी, जूली, अजय मिश्रा, हुडा, शिबू, नेहा, निशाद, ज्योति, रमेश यादव, जूली, शाबाश. देखिए, रमेश यादव कह रहे हैं कि ये आयरनी है. आयरनी वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जहां पर यू से समथिंग एंड यू मीन समथिंग. कहते कुछ हो और मतलब कुछ और होता है, उसको कहते हैं आयरनी. जस्ट अपोजिट उसका मतलब होता है, दैट इज आयरनी. एंड इफ यू से दैट चेतना हैज रेड शेक्सपियर, और अगर आयरनी बताओगे ना तो इसका मतलब हो जाएगा चेतना हैज नॉट रेड शेक्सपियर एट ऑल. मीनिंग ही आप उसकी खत्म कर दोगे, राइट? यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, चेतना हैज रेड शेक्सपियर, शेक्सपियर इज एसोसिएटेड विद द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, as the example question itself suggests, right? Works of Shakespeare. And when Shakespeare is associated with the works of Shakespeare, then figure of speech will be metonymy. Metonymy is the figure of speech of association. Association का figure of speech होता है
जिसको क्या कहा जाता है, एसोसिएशन का फिगर ऑफ स्पीच है, उसे कहा जाता है मेटोनिमी। ऑलराइट, क्लियर? Thank you, Chikun. Thank you so much for your benign response. Please do send the entire paper. I am traveling back to home, sir. I will send in half an hour. Okay, it's okay, no issue. Right, G Rajni, namaste. How are you? Question number 4th. The name of a literary organ of the American Transcendental Movement. Transcendental movement was an American movement in the 19th century, and there were a lot of poets, lot of philosophers associated with Transcendental movement. They founded a club called Transcendental Club, right? And Henry David Thoreau, Emerson, Whitman, right? They were the prominent members of the group. Right, here the question is, there was a literary organ of the American Transcendental Movement. Here literary organ means there was a journal that was the mouthpiece for the Transcendental Movement, for the Transcendentalists. उनके mouthpiece हुआ करता था, and the question is, what was the name of that literary organ? उस literary organ का नाम क्या था? This is the question. This is the question, what was the name of that literary organ? And that literary organ was the Dial. The Dial was a magazine in America, and Westland was published in America in this magazine only. Clear? Next question, question number 5th. The vanity of human wishes. The vanity of human wishes is what? A poem by Dr. Johnson, a novel by Trollope, a play by Dr. Johnson, or an essay by Dr. Johnson. The Vanity of Human Wishes is a poem by Dr. Johnson, a novel by Anthony Trollope, a play by Dr. Johnson, or an essay by Dr. Johnson. Right, Ji Firoz ji, namaste. Hemlata ji ko bhi namaste. Right? The Vanity of Human Wishes is a poem by Dr. Samuel Johnson. Right, Dr. Samuel Johnson की प्ले जो है poem थी Vanity of Wishes. It was not a play अजय, ये play नहीं, ये poem है Dr. Samuel Johnson की. Next question. If you say contiguous countries instead of contiguous countries, you will be making a mistake known as, right? If you say contiguous countries instead of contiguous countries, कहना आपको ये है, and you say this, right? Then you will be making a mistake, and what that mistake is called, what that mistake is known, euphemism, spoonerism, euphemism और malapropism. बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी. सुबोध जी नमस्ते. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इफ यू से समथिंग इन प्लेस ऑफ समथिंग intentionally or unintentionally to create some comic effect, that figure of speech is called malapropism. That figure of speech is called malapropism. And here, to say contiguous countries instead of contiguous countries, you use the figure of speech malapropism. Mrs. Malaprop was a character in a play by Sheridan. Right? वहीं से malapropism बना है. When she says, right, instead of saying pinnacle of success, she says pineapple of success. तो इसको बोलते हैं malaprop. Question number 7.
and do not think of the fruit of action, fare forward. So Krishna, as when he admonished Arjuna on the field of battle. These lines are taken from do not think of the fruit of action, परिणाम की चिंता मत करिए. राइट, फेयर फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहिए. तो कृष्णा, as when he admonished अर्जुना on the field of battle, ऐसा कृष्णा ने कहा अर्जुन को एडमोनिश करते हुए बैटल फील्ड में. इस पोयम की लाइन है, बोलिए. इस पोयम की लाइन है टी.एस. एलियट्स द वेस्टलैंड, टी.एस. एलियट्स Zidontion, T.S. Eliot's four quartets, or T.S. Eliot's Ash Wednesday. From where these lines are taken, the quotation from Gita, lines from Gita, the message of karma is shown here in these lines. ये lines कहाँ से है? T.S. Eliot से है. So Ajay Mishra, there are four parts in the four quartets. Four parts in the four quartets: Brent Norton, East Coker, Dry Salvages and Little Gidding. अगर यहाँ से है लाइन तो किस में से है? ब्रेंट नॉर्टन से, ईस्ट कोकर से, ड्राई साल्वेजेस से और लिटिल गिडिंग. From which work the line has been extracted, the line has been taken. कहाँ से ली गई लाइन? शाबाश शाबाश. These lines are from Dry Salvages, and Dry Salvages is a part of four quartets. So right answer to the question number 7 is C, four quartets. Next question, question number 8. Who of the following wrote The Serpent and the Rope? The Serpent and the Rope is a metaphysical novel. It is a metaphysical novel, and this novel was awarded the Sahitya Academy Award. Sahitya Academy Award भी इसको मिला था. And you have to find out who was the writer, who wrote the novel Serpent and the Rope. Serpent and the Rope किसका वर्क है? This is the question. बताइए फटाफट. Serpent and the Rope. Serpent and the Rope. The Serpent and the Rope is a novel by Raja Rao. राजा राव की नॉवेल है द सरपेंट एंड द रोप. इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी है. क्वेश्चन नंबर 9. Who of the following was the first Indian writer to have written the first novel in English? First Indian writer to have written the first novel in English. उसका क्या नाम है ये आपको बताना है. क्लास ले रहा हूं सर, क्लास के बाद बात करूं 10 बजे. Which of the following was the first Indian writer to have written the first novel in English? आज हमारे यहाँ पावर सप्लाई नहीं है, so your class might be interrupted at any time, so bear with me. अगर आगे बीच में तो कंटिन्यू रहेगी, और अगर नहीं आई तो इन्वर्टर बंद होगा, अपने आप बंद हो जाएगी. The first Indian who wrote a novel in English was his name was Raj Mohan's novel was the first novel written by any Indian in English.
Rajmohan's Wife, and the name of the novel was Rajmohan's Wife, written by Bankim Chandra Chatterjee. Bankim Chandra Chatterjee की नावल थी. Question number 10th. Dr. Johnson defends Shakespeare's violation of the unities on grounds of. Dr. Johnson defends Shakespeare's violation of the unities on grounds of. किस ग्राउंड पर वो वायलेशन ऑफ यूनिटीज को डिफेंड करते हैं? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सैमुअल जॉनसन and according to each critic, Shakespeare does not follow the classical unities, unity of time, place and accent, and his violation of unities was defended by Dr. Samuel Johnson. And on which ground he defends Shakespeare's violation? The first one, the reader's ability to reconstruct, the writer's freedom, the writer's limitation, or the rules of English drama. On which ground he defends Shakespeare's violation of unities? यहाँ पर आंसर जो है, राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज, सब लोग पहले बता लीजिए. से निशा ने बताया है, नेहा ने, तबस्सुम ने, अजय मिश्रा, नीरज, शिबू पांडे. वेरी गुड. Mr. Johnson says that Shakespeare followed the unity of accent, and unity of accent is the only unity that is to be followed. Unity of time and unity of place, these two unities were not given by Aristotle. In fact, they were imposed on Aristotle by Italian and French critics, and that's why Dr. Johnson says that Shakespeare was not bound to follow the unity of time and unity of place. इनको फॉलो क्यों करना था? इसलिए फॉलो करना था to show theatre, to show drama as the real presentation. And Samuel Johnson says that everybody knows that drama is being staged. It is the product of imagination. It is not the reality. And if anybody can think that he is sitting here in Rome, he can also think that he is now in Egypt. He can also think that he is in London. अगर ये लग रहा है, ये सोच लिया है कि दिन के 12 बजे हैं, तो ये भी तो सोच सकता है ना कि 3 बजे है, ये भी सोच सकता है कि 8 बजे है, सब कुछ सोच सकता है वो. इट इज टोटली डिपेंड करता है रीडर के एबिलिटी पर, रीडर के कंस्ट्रक्शन पर, वो यहां से डिपेंड कर लेता है. और इस क्वेश्चन का जो आंसर है, द ओनली करेक्ट आंसर हैज बीन गिवन बाय रजनी भारद्वाज. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, सॉरी, उसका करेक्ट आंसर है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. द बुक ऑफ जॉन रस्किन which influenced Gandhi's philosophy of life was. The book of John Ruskin which influenced Gandhi's philosophy of life, especially Gandhi's economic philosophy, was influenced by one of the 4 books. And one of the 4 books, all the 4 books were written by John Ruskin, who was a Victorian essayist, philosopher, watercolorist, right? And the name of the books are Sesame and Lilies, Unto This Last, Panera Palvaris, and the Stones of Venice. Which book inspired Mahatma Gandhi to formulate his philosophy, to formulate his ideas? Shabash, Pooja Maurya, Nisha, Subodh, Neha, Julie, Neeraj, Shibu. Very good. Come on, come on. चलें, शाबाश. ये बुक थी Unto This Last, and Mahatma Gandhi translated this book into Gujarati under the title Sarvodaya.
सर्वोदय के नाम से महात्मा गांधी ने इसको ट्रांसलेट भी किया था unto this last, and this was a collection of 4 essays by John Ruskin, and it formulated Gandhi's philosophy. Identify the novel which is a dystopia. Dystopia कौन सी है? Brave New World by Aldous Huxley, Erewhon by Samuel Butler, who wrote News from Nowhere, and then Jude the Obscure. Which of the 4 novels is a dystopia? And in yesterday's class I discussed dystopia. Dystopia is a fiction where everything is in chaotic order, disgusting and disturbing order, उसे कहते हैं dystopia. For example, George Orwell's novel 1984, that is dystopia. And here you have to find out the dystopian novel. Shabash. Ajay Mishra says A, and Subodh says A, Neeraj says A, rest are with B. Erewhon तो utopia है, it is not a dystopia. Erewhon is a utopia, it is not a dystopia. Right? It is not a dystopia, it is a utopia. And dystopia is Brave New World. Dystopia is Brave New World, written by Aldous Huxley. Brave New World is a dystopia. Brave New World is a dystopia, right? A is utopia, B is dystopia. नहीं, B is A is dystopia, B is utopia. Right? A is dystopia, B is dystopia. Utopia. The concept of the sublime is primarily associated with. Concept of sublime किससे associated है? The concept of sublime is associated with. सचिन मिश्रा जी, यूटोपिया में everything is in perfect order. In dystopia, everything is in disorder. In utopia, nobody is sick, nobody is ill, nobody is poor. In utopia, and in dystopia, इसका just उल्टा होता है. Clear? चलो. The concept of sublime is primarily associated with. Concept of sublime किससे associated है? Longinus, Plato, Horace or Aristotle. The concept of sublime is primarily associated with Longinus, Plato, Horace or Aristotle. Right? Who wrote the essay on sublime? And according to the essay, there are 5 sources of sublimity. There are 5 sources of sublimity written by Longinus. Answer is A, और सबका आंसर करेक्ट है. फिरोज, हुजा, जूली, अजय, शुभोध, तबस्सुम, पूजा, शिबू, रमेश, सचिन, जूली. आज सब लोग टीजीटी के हैं क्या? नहीं, पीजीटी वाले तो रास्ते में हैं, अभी घर नहीं पहुंचे हैं. नंबर 1 बात. और नंबर 2 बात, जिसने पीजीटी दिया है वो टीजीटी भी देगा. जिसने पीजीटी दिया है वो टीजीटी भी देगा. तो अगर आपका एग्जाम थोड़ा गड़बड़ भी हुआ है ना पीजीटी, तो अभी यू हैव 1 वीक टाइम टू रेक्टिफाई योरसेल्फ. आप टीजीटी के लिए भी 1 वीक काम कर सकते हो. पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, पूरे इंप्रूवमेंट से यू विल गेट सिलेक्शन देयर. द पैम्फलेट ऑन द आयरिश कंडीशन, an address to the Irish people. An address to the Irish people is a pamphlet on Irish condition, and this pamphlet was written by. This pamphlet was written by, composed by W.B. Yeats, P.B. Shelley, Jonathan Swift, or G.B. Shaw. Who wrote the essay? Who wrote the pamphlet on Irish condition? शाबाश. पूजा का टीजीटी है. कहाँ सेंटर है?
फिरोज, हुडा, रीता, जूली, तबस्सुम, शाबाश, come on. Ajay Misra has different opinion. जी, सुबोध कुमार, पूजा मौर्य, क्वेश्चन नंबर 14, come on. Apart from Parashivish Shally, PB Shally, apart from PB Shally, all the three, W.B. Yeats, Jonathan Swift and G.B. Shaw are Irish. Right? इनको छोड़ करके, शैली को छोड़ करके, तीन के तीनों आयरिश है, and all the three worked for Irish condition. But here, right answer to the question is B. P.B. Shelley, the pamphlet on the Irish condition and address to the Irish people was written by P.B. Shelley, not by W.B. Yeats or Jonathan Swift और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये पैम्पलेट पीबी शैली का था। सुबोध का आंसर बिल्कुल करेक्ट था और सुबोध के साथ आंसर अजय मिश्रा का करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Shelley was expelled from the Oxford University. Shelley was expelled from the Oxford University due to the publication of the revolt of Islam, the necessity of atheism, the triumph of life, the mask of anarchy. Shelley was expelled from the University of Oxford due to the publication of, किसकी publication के लिए, ये आपको आंसर बताना है। And along with P.B. Shelley, his friend Jefferson Hogg was also expelled from the university। और ये तो सब सिंपल से क्वेश्चंस है। The work was the necessity of atheism, right? Necessity of atheism. England is a totally religious country and there is no scope of atheism there. And once he wrote on the necessity of atheism, he was expelled from the University of Oxford without completing his degree. Next question, question number 16. Which famous romantic poem begins with the line, "Hail to thee, O blithe spirit, wild thou never wert"? Which of the following poems starts with the line, "Hail to thee, blithe spirit"? Hail means welcome. Welcome to you, spirited, blessed bird. But spirit बोलता है उसको, because bird thou never wert. Which poem starts with this line? Yes, Julie, Pooja, Rita, Ajay, Neha. आंसर लिखते रहो, रिट्रैक्ट करते रहो। Ode to Nightingale by Keats, To the Cuckoo by Wordsworth, To a Skylark by Shelley, and then to the Daisy. These are the options. Yes, Huda, Shalini, Shibu, Shenisha, Tabassum, Firoz, Subodh, Shashi Dubey. Shabas. Right, hail to the blithe spirit. This is the opening line of the poem To a Skylark by P.B. Shelley. P.B. Shelley की पोएम है टू ए स्काईलार्क, वहीं की ये ओपनिंग लाइन है, बर्ड तो तुम थी नहीं कभी। Which of the following poems features the phrase the still sad music of humanity? जी सचिन मिश्रा, the still sad music of humanity, ये कहाँ की लाइन है? Which of the following poems features the phrase the still sad music of humanity? कहां से लिया गया है ये बताना है। अब these questions are equally important for UPTGT, for UPPGT, for हेलो जी, एक बार ऑडिबिलिटी कंफर्म करिए। पावर सप्लाई डिस्टर्ब है, इसलिए आई हैव अनदर वे टू टेक द क्लास, और उस अनदर वे से क्लास लेना शुरू करते हैं। फटाफट लाइव हो जाइए, और लाइव तो आप वहीं हैं,
ऑडिबिलिटी कंफर्म कर दीजिए और फिर हम क्लास शुरू कर दें आपकी। जस्ट कंफर्म द ऑडिबिलिटी बिफोर आई स्टार्ट। Just confirm the audibility before I start the class. Class is already started. आवाज आ रही कि नहीं, एक बार मैसेज करके बताइएगा जी। वेरी वेरी गुड इवनिंग। Am I audible to all of you? I was here on this question. Which of the following poems features the phrase the still sad music of humanity? The still sad music of humanity. The right answer to the question is टिंटन एबी। टिंटन एबी की लाइन है। ऑल क्लियर है? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राइट, जस्ट बी हियर एंड आई विल कंप्लीट द क्लास विदाउट फेल। अगर अब इसकी भी बिजली नहीं चली गई तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. This occurs in a poem by. Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. This occurs in which poem? These lines are from किस पोएम से है आप तो ये भी जानते हो। यहाँ तो सिर्फ राइटर पूछा है कि these lines were written by whom? These lines were written by William Wordsworth. Right, the name of the poem is French Revolution. Name of the poem is French Revolution, and from French Revolution the line has been taken. Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. जी शशि, अजय, हुदा, रीता, जूली, फिरोज, रिंकी, गुड इवनिंग। रजनी, शेनिशा, जूली, शशि from French Revolution. Next question. Who of the following was not a contemporary of Wordsworth and Coleridge? कौन ऐसा बंदा है जो वर्ड्सवर्थ या कॉलरिज का कंटेम्पररी नहीं है, या यू कुड से हु ऑफ द फॉलोइंग was not a romantic? कौन रोमांटिक पोएट नहीं था? दिस इज द क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के कंटेम्पररी नहीं था, इट ऑब्वियसली मीन्स कि he was not a romantic. Sir Walter Scott, Robert Sade, William Hazlitt, they were contemporary. And who was not contemporary? Then answer to the question is it was Swinburne. A.C. Swinburne was not contemporary to Wordsworth and Coleridge. All right? Yes. Next question. This question is about rhyme of the ancient mariner. The rhyme of the ancient mariner is about. Rhyme of the ancient mariner is about what? A perilous adventure in the sea, the accidental killing of an octopus, the curse of sea god, the guilt and expiation of ancient mariner. Right? Answer to question number 20th क्या है? सी फिरोज, अजय मिश्रा का आंसर सी आ गया है और शशि दुबे का आंसर सी है। अब्बाश के निशा का सी है, सिब्बू का सी है, नेहा सिंह का डी और हुडा का आंसर ए है। राइम ऑफ द एंसेंट मार्नर किसके बारे में है? ये क्वेश्चन था। एंड राइम ऑफ द एंसेंट मार्नर इज अबाउट द गिल्ट एंड एक्सपिएशन ऑफ द एंसेंट मार्नर। एंसेंट मार्नर के गिल्ट एंड एक्सपिएशन की स्टोरी है, न कि पेरिलस एडवेंचर इन द सी की स्टोरी है, न कि एक्सीडेंटल किलिंग या कर्स है गॉड का, बट द पोएम इज अबाउट द गिल्ट एंड एक्सपिएशन ऑफ द एंसेंट मार्नर। व्हाटएवर ही हैज डन, वो उसको रिग्रेट कर रहा है, गिल्ट कॉन्शियस फील कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The poetry of Wordsworth and Coleridge
was notably influenced by. Poetry of Wordsworth and Coleridge was notably influenced by the Napoleonic Wars, the Glorious Revolution, the French Revolution, or the Poor Laws. Which movement inspired the poems of the poetry of Wordsworth and Coleridge? This is the question. Which movement inspired? Napoleon War, Glorious Revolution, French Revolution, or the Poor Law? Shabash, come on, come on. Everybody knows the answer. 21st. जी शेनिशा, जूली, रीता, हुजा, शशि, शिबू, ज्योति कनौजिया, रजनी भारद्वाज, इथरियल, फिरोज, नेहा, ज्योति रिपीट भी करने लगते हैं उसी में, राइट? तो आंसर टू द क्वेश्चन इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन दैट टुक प्लेस इन 1789, राइट? 1789 का मूवमेंट था एंड इट इंस्पायर्ड द फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स फॉर सम टाइम, और थोड़े ही दिन के बाद हेलुसिनेशन जो था इट ब्रेक्स, टूटता है, और हेलुसिनेशन जब ब्रेक होता है तो वो लिबरल से फिर कंजर्वेटिव होने लगते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेयरी ऐप. द हेयरी ऐप इज रिटन बाय. व्हाट इज द हेयरी ऐप एंड हु रोट इट? दिस इज द क्वेश्चन. The Hairy Ape is a play. It is a drama written in 1922. 1922. It is an expressionist play. Expressionist play है, and the hero of the play is young, beastly, unthinking laborer known as Young, and the play was written by Eugene O'Neill, the American dramatist. Eugene O'Neill was an American dramatist. He was the Nobel Prize winner writer. नोबेल प्राइज विनर राइटर थे यूजीन ओनील, थे नहीं मतलब, ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर. और हेरी आप इज एन एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, राइट? एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा लिखते थे ये. 1936 का नोबेल प्राइज यूजीन ओनील को मिला था. ही वाज अवार्डेड the Nobel Prize of 1936. Right? Samuel Beckett and Harold Pinto, they are also the Nobel laureates. Next question. Who among the following writers in English has not created an identifiable imagined locale? इसमें से कौन है जिसने एक इमेजिनरी लोकेल नहीं क्रिएट किया है? इमेजिनरी लोकेल का मतलब दे हैव क्रिएटेड अ फिक्टिशियस एरिया, अ फिक्टिशियस लोकेल, an imaginary locale, and they set their novels, they set their stories there, right? William Faulkner, Thomas Hardy, R.K. Narayan, or Salman Rushdie. Abash. William Faulkner created an imaginary county, and that imaginary county is Yoknop-Topha. क्या नाम है उसका? Yoknop-Topha, created by William Faulkner. Thomas Hardy created Wessex. R.K. Narayan is known for Malgudi. Is known for Malgudi, and Salman Rushdie
didn't create any locale, right? His novels are set across the universe, कहीं पर भी सेट हो सकती है. Rest of the three, they created their locale. Who is known for his egotistical sublime? egotistical sublime के लिए कौन जाना जाता है? Who is known for egotistical sublime? John Milton, William Shakespeare, William Wordsworth, or William Hadley? Right, the term egotistical sublime was coined by John Keats. Right, John Keats का coin किया हुआ ये term है, and he coined the phrase for to criticize William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करने के लिए उन्होंने फ्रेज को क्वाइन किया था ईगोटिस्टिकल सबलाइम. ईगोटिस्टिकल का मतलब होता है एक्सेसिवली कंसीटेड और एब्जॉर्ब्ड इन वन सेल्फ, सेल्फ सेंटर्ड आप जिसे कहते हैं. ईगोटिस्टिकल सबलाइम इज अ फ्रेज क्वाइंड बाय जॉन कीट्स टू डिस्क्राइब द पोएट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. एंड कहां पे क्वाइन किया था? इन अ लेटर टू रिचर्ड वुडहाउस. रिचर्ड वुडहाउस को एक लेटर लिखा था, कब? in 1818, and in that letter he coined the phrase. The egotistical sublime वहीं पर coin हुआ था. The phrase expresses the underlying self-centered nature of Wordsworth's poetry, particularly his use of the narrative voice to convey his own conception of a singular truth. Clear? Next question, question number 25th. Fatwa was issued on Salman Rushdie's name following the publication of. A fatwa was issued on Salman Rushdie's name following the publication of Midnight Children, Shame, Satanic Verses, or Grimace. Fatwa. Abash, come on, very nice. Ajay Mishra, Rita, Julie, Huda, Shibu Pandey. Satanic Verses सलमान रुश्दी की 4th नॉवेल थी, पब्लिश्ड इन 1988. The book was inspired by the Islamic prophet Muhammad. As with the previous book, Salman Rushdie used magical realism and relied on contemporary events and people to create his characters. What is the meaning of the title? The title refers to the Satanic Verses, a group of Quranic verses about 3 pagan Meccan goddesses, Allat, Al-Uzza and Manat. The part of the story that deals with the Satanic Verses was based on accounts from the historian Al-Waqidi and Al-Tabari. वहीं पर based थी, but when novel was published, he was alleged that he had attacked the Muslim Islamic values. आपके राइटर का आंसर याद नहीं आ रहा है? मेरा कौन राइटर है भाई? अच्छा, any this paper came like a storm in my life and slit my hopes with a sharp edged knife. Ani, please do send me the paper. Let me see कि क्या ट्रेजेडी हुई है और इन्होंने क्या क्रिएट किया है, क्या सिलेबस था और क्या सिलेबस का बाहर भेजा है इन्होंने. प्लीज डू सेंड मी द पेपर ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, द न्यू लाइसियम इंग्लिश लिटरेचर विद डॉक्टर JK तिवारी, and then I'll let you know. Next question.
UR Anandamurti's Samskara. UR Anandamurti's Samskara was translated by, किसने ट्रांसलेशन किया था आनंद मूर्ति के नावल संस्कारा का? खुद से, गिरीश कर्नाड ने, एच.एस. शिव प्रकाश और ए.के. रामानुजन. Who translated UR Anandamurti's Samskara? जी नेहा, शाबाश, आंसर करिए फटाफट फटाफट. शशि दुबे, अजय मिश्रा, शिबू पांडे, निशा बिहान. UR Anandamurti's Samskara was translated by A.K. Ramanujan. Girish Karnad was a dramatist, he was a playwright, he was a director, he was an actor, and the novel Samskara was translated by A.K. Ramanujan, not by Girish Karnad. Answer to the question is D. Who is the author of the poem Our Kazarnia Tree? ये किसकी पोयम है? Our Kazarnia Tree, सरोजनी नायडू, तरु दत्ता, रवीन्द्रनाथ टैगोर और कमला दास. किसकी पोयम है Our Kazarnia Tree? बोलिए फटाफट, किसकी पोयम है ये? क्वेश्चन नंबर 27. जी शाबाश, सबका आंसर सही है ये, बिल्कुल. पेपर इज सेंट, थैंक यू सो मच ऑन टेलीग्राम. Our Kazarnia Tree is the poem by तरु दत्ता. तरु दत्ता की पोयम है Our Kazarnia Tree. तरु दत्ता was very inspired from the romantic poets and she died at very young age. Why does Girish Karnad based his play Havadana on Thomas Mann's Transposed Heads? Thomas Mann की नावेल थी Transposed Heads, और उस Transposed Heads पर बेस किया है गिरीश कर्नेड ने अपना प्ले हावदना. एंड द क्वेश्चन इज why does he base his play Havadana on Thomas Mann's Transposed Heads? RK from Visakhapatnam. जी thank you so much. यार बहुत सारी चीजें तो हैं जो हमने कराई हैं आपको क्लास में. अभी मैंने कल ही कराया था जो है फ्लाइट ऑफ पिजन किस पर है. तो बहुत सारी चीजें, स्कारलेट लेटर, ऐसा तो अभी मैंने कराया था. ऐसा नहीं है कितना टफ आया था पेपर. अभी आप बैठ के आंसर देखेंगे ना
तो बहुत सारे आपके आंसर सही मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है। आप करके आए हैं पेपर हॉल में, भले ही आपको लगना हो, देखिए रॉबिन्सन क्रूसो पर तो पूरा पैराग्राफ ही आया है, पूरा पैसेज ही आया है। फिलहाल चलिए देखेंगे पूरा पेपर आफ्टर योर क्लास इज ओवर। फिलहाल जो राइट आंसर यहाँ पे है दैट इज ए, इट वाज अ मॉक हीरोइक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ओरिजिनल संस्कृत टेल्स। Which American poet wrote, I sound my barbaric yawp over the roofs of the world? Which American poet wrote, I sound my barbaric yawp over the roofs of the world? राइट, इस क्वेश्चन का आंसर है वाल्ट विटमैन। ऑप्शन इज बी हियर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वाल्ट विटमैन, आई साउंड माई barbaric yawp over the roofs of the world। पेपर को कल मैं करवाऊंगा आपकी क्लास में ही, देखते हैं क्या टाइम मिलता है। आई लेट यू नो, आई डू ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। Who among the following poets defined free verse as playing tennis without a net? Playing tennis without a net किसने डिफाइन किया है फ्री वर्स को? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एजरा पाउंड, फिलिप लार्किन और विलियम कार्लोस विलियम्स। Who defined free verse as playing tennis without a net? This is a repeated question for the people and all of you have mastered such questions, right? Robert Frost described free verse as playing tennis without net, and father of free verse किसको कहा जाता है? Father of free verse is Mr. Whitman. Which of the following poems deals with the neighborly relations? पड़ोसियों के संबंध से कौन सी पोयम डील करती है? नेबरली रिलेशंस रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सारी पोएम्स है। बर्चेज, होम बरियल, मेंडिंग वॉल और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। विच पोएम डील्स विद नेबरली रिलेशंस? नेबरली रिलेशंस, रिलेशनशिप विद द नेबरहुड, गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स। गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स, ये नेबरली रिलेशन की पोएम है एंड आंसर टू द क्वेश्चन इज मेंडिंग वॉल। मेंडिंग वॉल। Here you have to match. First line of the poem are given and you have to match. Because I could not stop for death, first line. O captain, my captain, two roads diverged in a wood, so much depends upon. These are the opening lines, these are the names of the poems, and then here are the poets. Robert Frost, William Carlos Williams, Emily Dickinson and Walt Whitman. Which one is correctly matched series? You have to find out. Question number 32nd. Because I could not stop for death is a very important poem by Emily Dickinson. Emily Dickinson की poem है and very important poem है Dickinson की. O Captain, My Captain is well known elegy written by Walt Whitman on the death of Abraham Lincoln, and two roads diverged in a wood, you better know him, Robert Frost, and the last one is So Much Depends Upon by William Carlos Williams. So first is with C. This is the right answer.
without thinking, you have clicked the answer. Right? Question number 31st. Right answer is D. Because I could not stop for death is a poem by Emily Dickinson. Oh Captain, my Captain by Walt Whitman. Two roads diverge in the wood. Robert Frost. So much depends upon is from William Carlos Williams. All right. Next question. Next question, 33rd. The lost generation is a name applied to the disillusioned intellectuals, aesthetes of the years following the First World War, who called them the lost generation. The lost generation is a name applied to a group of disillusioned intellectuals and aesthetes of the years following the First World War, who called them the lost generation. किसने किसको last generation कहा है? Thank you, Julie, and welcome again. All of you are welcome. H.L. Mencken, Willa Catho, Jack London, or Gertrude Stein, who coined the phrase lost generation. And you know that lost generation was basically a generation of poets, generation of novelists who started writing during or after the First World War. Right? During or after the First World War जिन्होंने लिखना शुरू किया था, they were described by Gertrude Stein as the lost generation. Gertrude Stein ने उनको lost generation describe किया है, खास करके Hemingway's generation. Right? Next question, that is 34th. The Mask of Anarchy. The Mask of Anarchy is a poem by P.B. Shelley. And what is it? Yesterday I talked about this poem, Mask of Anarchy. Peter Bill the Third, Selfhood the Tyrant. These were the satirical poems. Right? अब आज वही question है in a new bottle. Old wine, new bottle. Mask of Anarchy by Shelley is a pastoral poem about the evils of industrial revolution, a poem about the corruption rampant in Europe, a play about the civilizational crisis in Europe, or a poem of political protest written in response to Peterloo massacre. Yes, Shashi, absolutely true, absolutely right. Shashi, Firoz, Julie, Shenisa. The poem The Mask of Anarchy was a poem based on Peterloo massacre. Massacre का मतलब genocide, नरसंहार. पीटरलू में जो नरसंहार हुआ है, मसाकरे हुआ है, उसी पर एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है पीबी शैली का द मास्क ऑफ एनार्की. right answer to question number 34th is D for Delhi. Next question, 35th. Emily Dickinson's use of open form or free verse. ओपन फॉर्म और फ्री वर्स या इसी को वर्स लिब्रे कहते हैं, is comparable to her contemporary American poet. Right? Contemporary American poet के comparable है. And who was the contemporary American poet who wrote in open form? Robert Lowell, Annie Bradstreet, Walt Whitman, or Sylvia Plath? Fully answer. Who is known for free verse? Who is known for open verse?
and in whose imitation या on whose line Mrs. Emily Dickinson wrote in open form. And right answer to the question is here. It was Walt Whitman. Emily Dickinson's use of open form or free verse is comparable to her contemporary American poet Walt Whitman. Right, Walt Whitman. Next question is question number 36. Who is the author of the poems Elegy for Mrs. Virginia Woolf and William Butler in Limbo? There are two poems and you have to identify the poets. Right, two poems यहाँ पर है, Elegy for Mrs. Virginia Woolf and William Butler in Limbo. Who wrote these two poems? Options are Keith Douglas, W.H. Auden, Sidney Keys or Stephen Spender. Who wrote these two poems? Options are here, questions are here. Elegy on Mrs. Virginia Woolf and William Butler in Limbo. These poems were written by Sidney Keys. इसका भी आंसर सी है. क्वेश्चन नंबर 36 का भी. नाउ क्वेश्चन नंबर 37. Who among the following is mourned in Walt Whitman's O Captain, My Captain? O Captain, My Captain is an elegy by Walt Whitman on the death of Ralph Waldo Emerson, John Keats, P.B. Shelley or Abraham Lincoln. On whose death Mr. Walt Whitman wrote the elegy O Captain, My Captain. Shabash. O Captain, My Captain. Question number 37. Shashi, Shenisha, Huda, Rita, Julie, Rajni, Ethereal. Very nice. Right. On the death of Abraham Lincoln, Walt Whitman wrote 4 elegies. Out of the 4, 2 are more popular. Walt Whitman's O Captain, My Captain and When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed. Right, ये elegies है on the death of Abraham Lincoln. Abraham Lincoln was the American president and he was killed during the Civil War. Expostulation and reply. Expostulation and reply was written by. Expostulation and reply was written by William Wordsworth, William Collins, S.T. Coleridge, Alfred Tennyson. जी कैप्टन साहब नमस्ते. Who wrote the poem Expostulation and Reply? Right? Expostulation and Reply, The Table Turned, Resolution on Independence, Daffodils, Immortality Ode, Tintin Abbey, The World is Too Much With Us, Sonnet upon Sonnet. Right? ये सब एक ही बंदे की पोएम है और वो वर्ड्सवर्थ की है. और कैप्टन साहब सोच रहे हैं इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछ लिया है ना. ये सब टीजीटी टाइप क्वेश्चंस है और वो क्वेश्चंस ऐसे ही आसान होते हैं और आसान क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. हर क्वेश्चन आसान नहीं होता. जैसे कि ये है ना. से गुलनाज खान का भी स्वागत है. River Dudden Sonnets is a sonnet sequence by. River Dudden Sonnets is a sonnet sequence by Elizabeth Browning, George Meredith, William Wordsworth, DJ Rossetti. हम भी टीजीटी वाले हैं. अरे वाह, बधाई हो फिर तो. River Dudden Sonnets were the sonnets written by William Wordsworth. William Wordsworth की ये sonnet cycle है River Dudden Sonnets.
नेक्स्ट क्वेश्चन 39th के बाद 40th. The playboy of the Western world. The playboy of the Western world is a play written by G.B. Shaw, Samuel Beckett, J.M. Synge, or Eugene Ionesco. Who wrote the play Playboy of the Western world? Playboy of the Western world बहुत controversial play था when it was performed, and the question is who wrote the play Playboy of the Western world? Shabas. Question number 40. Right answer to question number 40 is who wrote the play Playboy of the Western world? It was John Middleton Synge. John Middleton Synge, popularly known as J.M. Synge, he wrote the play The Playboy of the Western World, and he was an Irish. He was an Irish, and he was one of the contemporaries of William Butler Yeats, and he was involved in the revival of Irish theatre, one of the founding members of the Dublin Theatre. Which of the following stories is not written by Nathaniel Hawthorne? Nathaniel Hawthorne was an American, and which of the following stories was not written by Nathaniel Hawthorne? कौन सी स्टोरी है जो उनकी नहीं थी? बोलिए फटाफट. शाबाश. इसका आंसर क्या है? सी. और सी आंसर इसलिए है क्योंकि दिस इज द स्टोरी ऑफ एडगर एलन पो. एडगर एलन पो की स्टोरी है. रेस्ट ऑफ द थ्री जो है वो किसकी है? रेस्ट ऑफ द थ्री नाथानिएल हॉथॉर्न की है. ये नॉट वाले क्वेश्चन नैया डुबो देते हैं. ध्यान से पढ़िए ना. नॉट वाले ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो नॉट पे तो चले ही जाओगे. लिटरेचर तो आया ही नहीं था. अब क्या करे जॉनी? कहा तो यही गया था कि लिटरेचर ही आएगा, बट अब धोखा दे दिया, गद्दारी कर दी, आपके साथ खेल कर दिया, गेम कर दिया, चीटिंग कर दिया, बड़ी ज्यादती कर दी. अब क्या किया जा सकता है? वैसे आप ऐसे नहीं कह सकते डायरेक्टली कि लिटरेचर तो आया ही नहीं था. लिटरेचर आया था और अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, ऐसा नहीं है. और जॉनी आप भी अपना पेपर मुझे भेजिएगा टेलीग्राम पर. देखो आपका पेपर सबका सेम है कि पेपर अलग अलग भी आए थे? भेजिएगा पेपर. John Dryden's heroic tragedy All for Love takes the story of Shakespeare's Antony and Cleopatra. ये देखिए किसी का गलत ही नहीं है. एंटनी एंड क्लियोपाट्रा इसका आंसर सही है. AC Bradley's Shakespearean tragedy was published in. AC Bradley, Andrew Cecil Bradley की वर्क on Shakespearean tragedy was published in. Right? AC Bradley's Shakespearean tragedy was published in 1904, consisting of 10 chapters. Right? Consisting of 10 chapters, published in 1904. Next question.
Thomas and Henrietta Bowdler's edition of the family Shakespeare gave rise to the word Bowdlerized. What does it mean? Bowdlerized, the term has come from the surname of Henrietta Bowdler and Thomas Bowdler. They edited Shakespearean plays and got them published under the title The Family Shakespeare. What is the meaning of the term Bowdler? Options are the expurgation of indelicate language, the modernization of archaic vocabulary, the insertion of bawdy songs, the expansion of female characters. These are the four options. And Henrietta and Thomas का जो collection है Family Shakespeare published in 1807, first edition consisting of 20 plays, and second edition जब publish होता है then it consisted of 36 plays. And right answer to the term Bowdler is the expurgation of indelicate language. Right, the expurgation of indelicate language. This is the right answer. This is the true answer. Right, Aparajita ji, welcome back. Everything is fine now. Question number 44th. The Professor. The Professor is written by. Professor is the novel, and who wrote the novel The Professor? Charlotte, Thomas Hardy, Anthony Trollope और जॉर्ज एलियट. किसकी नॉवेल है द प्रोफेसर? बोले कमान बी अ प्रोफेसर. हु रोट द नॉवेल द प्रोफेसर? किसने लिखा है द प्रोफेसर? जी, गुलनाज खान का आंसर आया है. जूली गौतम, शाबाश. नेक्स्ट, विनीता गंगवार, वेरी नाइस, वेरी गुड, कम ऑन जी. कैप्टन साहब का भी आंसर है, शेहनिसा विहान का भी है, और सबका आंसर अब सी ही है. कोई चेंज नहीं करेगा बिकॉज एवरीबडी बिलीव्स इन एवरीबडी. हर कोई हर एक में भरोसा करता है और इसलिए सब आंसर सी लगाएंगे, और इसलिए किसी का सही नहीं जाएगा. मुझे पूरा भरोसा है आप पर. और इसका आंसर जो है वो ए है. चार्लोट ब्रांटी की नॉवेल है द प्रोफेसर. चलिए, ग्रेट. द प्रोफेसर चार्लोट ब्रांटी की नॉवेल है. जीके हुडा ने बताया है इतनी देर में. वेरी गुड. चल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. दैट इज 46th. Arrange the following stages in a sequence in which all Shakespearean tragedies are structured. Use the code given below. Code given below: denouement, conflict, exposition, climax. Arrange the following stages in a sequence in which all Shakespearean tragedies are structured. ऑडियंस पोल गलत हो गया. हाँ जी, ऑडियंस पोल गलत होता है, इसीलिए ना सारे एक ही आंसर देने लगते हैं, तो मैं समझ जाता हूं कि नाउ यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक. डेनुमा, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमैक्स, एक्सपोजिशन. द फर्स्ट वन इज एक्सपोजिशन, दैट इज एक्ट 1. एक्ट 2 डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट. एक्ट 3 deals with the climax. Act 4 deals with the falling action, and Act 5 deals with the denouement. Hence the answer is 4. पहले नंबर पर कौन सा आएगा? थर्ड. फर्स्ट पे थर्ड, सेकंड पे 2, थर्ड पे 4th, और फर्स्ट सबसे लास्ट में. राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज A. This is the arrangement of Shakespearean plays. Next question. Who among the following gave a happy ending to King Lear? अब अगर ये क्वेश्चन किसी का गलत हुआ ना
तो सजाए मौत से नीचे कोई सजा नहीं हो सकती है। फिर आप उम्मीद ना करें कि कुछ आपका भी हो सकता है। Who gave a happy ending to King Lear? King Lear को हैप्पी एंडिंग किसने दिया था? दिस इज द क्वेश्चन। जेम्स क्वीन, नाहम टेट, पेग वॉफिंगटन, चार्ल्स मैकलिन। किसी का गलत नहीं जाएगा। ट्रिपल बी पक्का है। अरे ट्रिपल तलाक होता है भाई, ट्रिपल बी कहां से होता है कैप्टन साहब? जहां आपने ट्रिपल किया वहां मतलब कुछ गड़बड़ ही है ना। इसका आंसर है नाहम टेट। इन नाहम टेट in 1681 rewrote Shakespeare's play The King Lear, and he changed the ending from tragedy to tragic to comic ending, and from 1681 to 1600 to 1823, from 1681 to 1823, this comic ending, this happy ending was performed. In 1823, tragic ending was reinstated by Edmund Kean. Edmund Kean was an actor. He reinstated the tragic ending in 1823 and happy ending देने वाले जो थे he was नाहम टेट। क्लियर? ये नाहम टेट है। अच्छा, सजाए मौत के डर के मारे ट्रिपल में लिख दिया है। वाह, अरे ट्रिपल भी कर दिया ना कहीं तलाक 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 तो भी सजाए मौत ही है। फिर तो लोग कहते हैं मोदी मोदी मोदी, और हमारे यूपी में रहोगे तो फिर योगी योगी योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following characters in Shakespeare's Tempest is associated with the earth? Who is associated with the earth? अर्थली करेक्टर किसको कहा जाता है? फर्डिनेंड, एरियल, कैलिबन और प्रॉस्पेरो? Who is known as अर्थी करेक्टर? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 48। शाबाश, आंसर सी है। Caliban is known as the character who is associated with earth and who lives on earth and who has earthly characteristics. Next, in King Lear, who among the following speaks in the voice of poor Tom? पुअर टॉम की वॉइस में कौन बोलता है? इन किंग लियो, who among the following speaks in the voice of poor Tom? Kent, Edgo, Edmund or Gloucester? Right? Who speaks in the voice of poor Tom? Kent changes his name and he becomes pious. Edgar changes his name and he becomes poor Tom. Edgar becomes poor Tom and he speaks in the voice of poor Tom. Right? He speaks in the voice of poor Tom. These two characters disguise in the play King Lear, right? Earl of Kent and the legitimate son of Gloucester. Edmund is the illegitimate son of Gloucester. Question number 50. If you cannot understand an argument and remark, it's Greek to me. If you cannot understand an argument and remark, it's Greek to me,
यू आर कोटिंग, आप कोट कर रहे हो किसको? जॉन मिल्टन, सैमुअल जॉनसन, विलियम शेक्सपियर और जॉन डन. It's Greek to me means I am unable to understand it. It's Greek to me. The line is from which writer? The line is from which author? Right. Author का नाम सबको पता है. The author is William Shakespeare. And now you have to tell from which play the line has been taken. कहां से लाइन ली गई है ये भी बता दीजिए. From which play the line has been taken? It's Greek to me. Question number 51st. आज ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आज रेस्ट का डे होना चाहिए था after the paper, but I thought to meet you, so I came here. It is as an intertext of Shakespeare's Hamlet. Rosencrantz and Guildenstern are dead is written by. Rosencrantz and Guildenstern are dead is written by. J.M. Synge, Harold Pinto, Erskine, or Tom Stoppard. Everybody knows the answer. Rosencrantz and Guildenstern are dead is a drama of absurd, theatre of absurd, written by Tom Stoppard. Right? Tom Stoppard ने लिखा था. Tom Stoppard also wrote the script of Shakespeare in Love. Tom Stoppard also wrote a play in neon ink based on E.M. Forster's A Passage to India. Question number 52nd. Through the Looking Glass. Through the Looking Glass is written by C.S. Eliot, W. Yeats, Edward Lear or Lewis Carroll. Through the Looking Glass is a novel. Right? Nonsense literature की कैटेगरी में आता है. Through the Looking Glass. And who wrote the novel Through the Looking Glass? Question number 52nd. Question number 52nd. Who wrote Through the Looking Glass? It was Lewis Carroll. It was Lewis Carroll who wrote Through the Looking Glass. Option D is the correct answer. Question number 53rd. The Rainbow is a novel by D.H. Lawrence. The Rainbow is a novel by D.H. Lawrence, and the Rainbow narrates the history of. किसके history को narrate करता है? Rainbow. Right? The Rainbow is a novel by D.H. Lawrence, and it narrates the history of the Watson's family, the Brangwyn family, the Ford family, the place called Egdon Heath. As you know, that Rainbow is the sister novel of Women in Love. Sister novel है Women in Love की, and Women in Love and the Rainbow ये family saga है, and the novels describe the 3 generations of a family. And what is the name of the family? This is the question number 53. Name of the family क्या है? And right answer जो है Brangwyn family. उर्सुला गुद्रुन एक दिन बात भी किया था इसकी. Right? Brangwyn family के 3 generation से टैकल करता है, डील करता है. Right answer is B. वाटसन फैमिली पर तो इनकी नॉवेल नहीं है, एक नॉवेल सेन ऑस्टिन की है. नेक्स्ट क्वेश्चन 54th. Who of the following did invent the term sprung rhythm? Sprung rhythm is a term invented by.
T.M. Hopkins, Robert Burns, P.B. Shelley or Tennyson, who invented the term sprung rhythm. sprung rhythm किसका टर्म है? कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? sprung rhythm, inscape and instress and curtal sonnets, these three terms are dedicated to, are attributed to, are invented by Gerald Manley Hopkins. And now this is the last question of today's class. Sir Toby Belch and Sir Andrew Ogochik are the famous characters in, they are the famous characters in Shakespeare's As You Like It, Measure for Measure, Midsummer Night's Dream or The Twelfth Night. These are the famous characters from Shakespeare's plays. Question number 55th, simplest question, and the correct answer: Vinita, Gulnaz, Feroz, Zuli, Huda, Shashi, Shibu, Rita. Yes, Vinita, don't repeat. Right answer to the question is Twelfth Night. Twelfth Night is the play. The subtitle of the play was What You Will, and it is a romantic comedy by William Shakespeare and Sir Andrew Ogochik, Toby Belch, Malvolio, Maria, Olivia, Viola, Duke Orsino, called Cesario, Sebastian. Right, these are the characters of the play. Right, ये characters हैं play के. जी, कल का PDF आपको मिल गया होगा जूली, इसका भी PDF आपको अभी थोड़ी देर में या सुबह कल मिल जाएगा. Thank you so much for joining the class. Tomorrow I will come with the questions of today. आज जो पेपर हुआ है उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को लेकर के हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. वेट करिएगा. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. गुड लक. गुड नाइट. बाय बाय. जय हिंद. जय भारत. ओके गुरुजी, आज मेरा फर्स्ट डे था. विनीता, हाउ वाज द क्लास? Please do give your feedback once the class is over in the comment section. WhatsApp पर भी चैनल है, पर बहुत